अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़बी अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। हाज़िर रहो ते शाद रहो ते आबाद रहो ते हज़ूर नबी सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, क्या हाल आप सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक ही होंगे, क्योंकि आपके भाई की आपके साथ दुआएं हैं। अच्छा जी, आज हम जनाब जो आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं वो है जी सर्दियों का जो ख़ास तोहफ़ा। इससे पहले मैंने अपलोड किया था गाजर का हलवा, ठीक है, जो बग़ैर कद्दूकश किए बहुत बनाना आसान था, वो मैंने आपको वो अपलोड किया है। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है जी दाल मूंग का हलवा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये सर्दियों की ख़ास डिशें हैं जो दुकानदारों की बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। तो आज हम बनाते हैं जी दाल मूंग का हलवा। मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, भूलिएगा मत, और कोशिश कीजिएगा कि तमाम दोस्तों को शेयर भी करते जाइएगा। इससे हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और आपका जो प्यार है वो साबित होता है। और यही आज अगर जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो यही सबसे बड़ा जो हमारे लिए वो इनाम है आपकी तरफ से, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, खानों में, आपके सेहत में, ताकत में, ईमान में, खुशी में बरकत अता फरमाए। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ।
जी ख़वातीन हज़रात, वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरी देखी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसकी समझ नहीं आई। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको उसका पूरा भरपूर जवाब देने की, ताकि वो आपकी समझ में आ सके। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।